2013 is not that far. So Very recent past. there are no hospitals, medical facilities. Not enough, because the pilgrimage happens in lakhs. Yeah. So somebody needs to focus on it completely, dedicatedly, work on it. They have trained the basic doctors in managing, identifying, investigating, and keeping ready for the surgeries. They have done hundreds of surgeries free of cost. How much time do you think typically in a heart attack a person gets? But what have been your memories of some situations where you got scared? उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आए हजारों लोग लापता. The worst hit was the Kedarnath Valley with its 8th century temple dedicated to Lord Shiva. I still remember the figure where we has treated around 24,000 pilgrims. Amongst them, we received 19 deaths in our hospital. Hi, welcome to Flirting with the Fish. ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, ज़रूर देखिएगा. ये है डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी के साथ, जो कि वन ऑफ दोज 4 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने इनिशिएटिव से 4 धाम के रूट पर हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, फुल्ली वेल इक्विप्ड, जहाँ पे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती हैं या मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड होती हैं. इतने बढ़िया हॉस्पिटल्स बनाए हैं कि वहाँ पे आपकी मेजर से मेजर सर्जरीज हो जाती हैं, बड़े से बड़े लाइक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोथर्मिया जैसी चीज़ें ट्रीट हो जाती हैं. So let's listen to him, Dr. Reddy, here on this podcast and get more inspiration. I hope you like it. Why are you doing what you're doing? Becoming a doctor itself was a journey. And once you become a doctor for some purpose, that is service, so it has become a quest. As a kid, when I was in school, maybe around 5th standard, we lost father. He was in a difficult health condition. So after becoming a doctor, so when I was visiting my native village, then it was a deja vu for me, where I felt, I was running behind a bullock cart where he was taken into a hospital. He was in the bullock cart. I was running behind with my relatives. So I could not catch up the pace, so it went ahead. So this accessibility and affordability was always there in our country. It's still there in many parts of the country. So since then, since I became a doctor, that was the motivation towards my college days. We used to have I used to run 30 camps and 30 different teams of my friends, seniors, juniors, faculty. So we revolutionized the living standards of around 25 to 30 slum areas in and around city. So this service to the needy has been always back of the mind, motivated by my mother. And she used to say, whenever there is anybody in need, God has made you doctor. So it has to be delivered to the utmost needy at any cost. Let's go to that. How did you come and join the mission? Yes, that's a very interesting turn. It was a casual conversation with one of my senior, is in army. So once we interacting, he was traveling for a camp. Okay. He suggested, why don't you join? So it was like deja vu for me. The same thing I used to do in my college days. I used to lead many of my teams, my colleagues, my juniors. So it was redefining purpose again. So I just joined for a casual camp. Just like that. So that was the first thing I tried to understand what this Vivekanand Health Mission has been doing since long by then already. So it was a great initiative and very tough terrains, tough people, So it was a repetition I started doing. So doing camps again and again.
So then I found purpose into it. Mainly it started in 2012 by a group of doctors, Dr. Anu Singhal, Dr. Rakesh Tyagi, Dr. Kapil, and many of their batchmates who were all Agra Medical College passouts. So they found this, I think Singhal has started with a single camp, a small room taken on rent along with his wife, Dr. Tara. So it was a tribal area of Vikas Nagar ahead of Dehradun. 2013, if you remember, there was Kedarnath calamity. So naturally, the doctors, the team, when they got the news, they roused to the occasion. They served hundreds of people, but they were the first team, I guess. They reached to the location on the spot. Before anybody could reach, this team was there. So they rescued many patients, many pilgrims. They treated them. That then everybody came. Governments has roped in. Many NGOs came in. So this team has a vision. Then they thought, this is Uttarakhand and Devabhumi. This Devi Apada might happen, will happen every now and then. So look at the Hindu ideology, how they envision. Even Apada, that means calamity, they defined as Devi Apada. Divine, it happens. So, but we have to be prepared to rise to the occasion to save people, to help people. So, they thought, we should have some purpose to it. We should do something about it. Not just leave it like that. Not just leave it like that. In case something happens like this, so there should be something which can, rescue them. So that's how they start. They again look at the team's commitment. They went to Gangotri. They had a dip at that freezing waters. They have taken a resolution to establish 4 hospitals across the Char Dham route. Was there something new that you saw or something that you felt at that moment to leave such a stable life? Yeah, stability that matters. So stability in terms of monetary, in terms of comfort. So, once the purpose, we meet the purpose of life. So our journey redefines. So that's what I found. And once I started working with this team, the amazing team, they've been doing wonderful job, saving millions of people, serving millions of people with utmost devotion and dedication. And maybe it's like, running a parallel government to rise up to the occasion to such volumes. What sort of volumes are these? Volumes in the sense, treating maybe few lakhs of people in short duration of Char Dham, like 6 months of yatra it happens from Akshay Tritiya to Deepavali. Yeah. So around 3 to 5 lakhs pilgrims they treat, and not only 3 to 5 lakhs, not only addressing their basic ailments, but to the advanced, like retrieving patients from heart attacks, addressing their emergencies and evacuations, and having so many doctors at that site with lot of medicines, logistics. So I am a soldier, so I know how difficult it is to escalate to that level. Yes. One, maintaining training. Yeah. Second, logistics. Third, sticking onto the ground to serve till the last man, to the last purpose.
So it's a unimaginable commitment, Yeah. devotion, Yeah. you know. So this was after 2013, 13. after Kedarnath flood. Yes, after 13. First So hospital, 2013 is not that far. So very recent past. there are no hospitals, medical facilities. There could be. Government has got their own, infrastructure. Okay. But if you Not look enough. not enough, because the pilgrimage happens in lakhs. Yeah. So somebody needs to focus on it completely, dedicatedly, work on it. So this team of doctors, they have done it. For these services, people have to pay the Yes, basic fees. basic fees, Yeah. very Sure. basic. Sure. And surgical teams, they developed a beautiful system of surgical teams, like a general and laparoscopic surgeon, and orthopedician, and anesthetist. There's a team, they travel from Delhi NCR once in a fortnight. And the local team, they have trained the basic doctors in managing, identifying, investigating, and keeping ready for the surgeries. They have done hundreds of surgeries free of cost. So what's the model? Like, how does each hospital work? So there are 3 hospitals at the high altitude where the temples are there. All 3 hospitals are completely free of cost, having no billing counters. No billing counters. No billing counters. And it is treated like puja. For them, for this team, it's a puja. I mean, service to the humanity, service to God. The doctors and healthcare team. So they're all then payrolls. So we have to pay their salaries. So you have a number of doctors and staff on the payrolls. Yes. We have got more than 150 doctors as on date on payroll. More than 500 to 700 staff on payroll. The original hospital, which was started like a small camp, a room, now it's 120 beds, multi-specialty hospital, having a cath lab and having spinal injury center. It has a spinal injury system? Yes. And this hospital has everything specialty, available there. Few cancer treatments are not available as on date. Yeah. Less that, we have a beautiful cardiac center, beautiful a urology center, nephrology dialysis center, spinal center, and it has got a CT scan, MRI, ultrasound, of course, highly digitized X-ray machinery. Second, this hospital, they do hundreds of camps in the villages. They do run women health camps and cancer awareness screening and school health program. So it has gone to different mode now. It has become an institution now. My God. तो इसलिए हमने एक और इसमें पहल किया है 2-3 वर्ष पहले. हमने ये अभी उत्तराखंड में अपना 12 हॉस्पिटल है अभी. हरिद्वार से लेके चार धाम के मार्ग में पूरा 12 हॉस्पिटल है. मार्ग में 4 है और धामों में 3 है और एक बेस हॉस्पिटल बड़ा अस्पताल धर्मावाला में 120 बेड का अस्पताल है. तो इस सारे अस्पतालों की श्रृंखला को हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से चार धाम साथी, अच्छा, इस नाम से हमने लॉन्च किया. एक मोबाइल ऐप है, एप्लीकेशन है चार धाम साथी. अच्छा, जो हमने ये नाम भी इसलिए रखा कि आपको चार धाम यात्रा के दौरान आपका साथी बन के रहेगा. तो क्या कर सकते हैं इस ऐप पे? इसमें ये सारे जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारी, इसमें दर्शाया गया. ओके. इसमें फैसिलिटीज क्या क्या है और कहाँ कहाँ है. तो आप अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं. हाँ, ढूंढ सकते हैं अपना यात्रा मार्ग में कहाँ कहाँ अस्पताल है. एक दूसरा, इस सारे अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो आपको क्या चाहिए वो आपको मिलेगा कि नहीं. तीसरा, इसमें दे कैन टॉक टू अवर डॉक्टर डायरेक्टली ओवर द ऐप. यस. तो अगर आप थोड़ा दूर भी हो बट आपको पहले कंसल्ट करना हो, टेली कंसल्टेशन कर सकते हो कि क्या कर सकते. एक तीसरा, उसमें गूगल मैप्स के द्वारा लिंक है. यू कैन सी हाउ मच डिस्टेंस यू आर इन. इन केस नज़दीक है, कोई ऐसा परिस्थिति है कि आप स्ट्रक हो गया,
ट्रैवल आप नहीं, आपके पास साधन नहीं है तो अपनी एम्बुलेंस वहाँ पहुँच सकती है। बहुत तीसरा हमने इसको गवर्नमेंट सर्विसेज को भी इंक्लूड किया हमने, लाइक 108 इज एक्सेसिबल। हाँ 108 is very active in Uttarakhand, अच्छा very active. They reach, they're very prompt and very active. उसके साथ तो 10, क्योंकि जब इमरजेंसी में आपको पता नहीं चलता कि किसको कांटेक्ट करना। हाँ यहाँ So- हमें दिल्ली जैसे शहर में नहीं पता चलता। So इसमें they can click on 108, you can take their help, ओ, तो वो ऐप से 108 कनेक्ट होके आपको हेल्प मिल जाएगी। मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। और यात्रा कैसे करना चाहिए ये भी वहाँ जो है एक पेज में हमने दिया कि इस कौन सी लोकेशन में टेम्पल्स है जो आप विजिट करना चाहते हैं, तो वहाँ एल्टीट्यूड कितना है, आपको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीजें क्या ध्यान क्या में रखनी अपने चाहिए। आप को जो है तैयारी करना चाहिए, ये सब भी उसमें है। नियरेस्ट हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल को वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एम्बुलेंस चाहिए तो मंगा सकते हैं, बिल्कुल और उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है वो देख सकते हैं। बिल्कुल और बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक एक 108 की सर्विस चाहिए, वो सब वहां से सेंट्रली हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। You said there are about like 3 to 5 lakh people who come cumulatively in these Char Dhams. What kind of problems do they come to the hospitals for? All these 4 shrines, Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. So these are the Uttarakhand Char Dham, Yeah. not the overall Char Dham. Yeah, That's yeah. different. Yeah. So these are located around 11,500 to 12,000 feet above sea level. We get a lot of patients with severe hypothermia. In the sense the entire body gets cold. Frozen. And temperature changes weather changes very rapidly. Suddenly it will be Suddenly. changed. Yeah. Somebody is traveling by air, by heli. Yeah. So there's a storm, or the weather packs up. Yeah. Heli cancels. They have to stay for a night or 2 or 3 days. So they get stuck. And especially when you're flying, then your body is not acclimatized at all. At all. They have You're like to. there in an hour. They have to be back in few hours. Yeah. And they're not back in few hours. Their acclimatization levels are very low. They get stuck. I still remember in 2019, I guess, we had an unfortunate day in Kedarnath, where the similar thing happened. The weather packed up, and 8 of them, they were waiting for their heli. They had no accommodation to go, and they had no plans, idea how to go, where to go. They were frozen to death sitting in the helipad. Local teams, they rescued to our hospital. By the time it was too late. And that unfortunate day, our hospital staff, in that difficult conditions, they attended to 1,600 pilgrims in a small setup. Like it's a 8-bedded small setup. We had, because we were trying to envisage and trying to run the show from 2019 onwards with a small hospital. So that has triggered this team with, we should do something about it. By God's grace, we have now a 50-bedded hospital ready there. By next season, with all the God's blessings, it might come into action. So 50-bedded. This is in Kedarnath. Kedarnath. So this has been since 3 years so now. Unfortunate. I'm still thinking about what you just said. So Yeah. the entire... So every single second is valuable there. Every individual is valuable. So we cannot talk in numbers, but every person has to be rescued, treated, and sent back home safe and sound. In high altitude, fitness doesn't matter. Okay. So there's this thing we have to understand. Suppose Kedarnath. It has got 22 kilometers trek.
in case Right. somebody wants to go by Go by foot walking, yeah. walking. So of course, to trek one needs fitness. And one has to practice this, few hours of minimal walking, training one needs. Yeah. Altitude has got its own strategy to treat the body. Okay, what is that strategy? Like in army, we, as I said, we send our soldiers by staging. Despite having so much of physical training, Yeah. despite having so much of observations, for many soldiers it doesn't suit. So we send them back. So it means it's a body to body Yes. phenomena. Yes, body to body phenomena. Okay. Second, yes, in case you have encountered any such previous incidences, again, if you want to travel, what you have to do is you have to take a consultation. तो मतलब अगर चार धाम की यात्रा करनी प्लान कर रहे हो तो उससे पहले एक मेडिकल चेकअप कर लेना 100% बहुत जरूरी है. 100%. एल्टीट्यूड के कारण सिंपल ऑक्सीजन परसेंटेज यहाँ कम होता है. बिल्कुल. एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड में. बिल्कुल. सो नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जब एक्लिमेटाइजेशन नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन डिमांड जैसे रेज होता है तो बॉडी अपने ऊपर कंपेंसेट करने के लिए प्रयास करती है. सो जब कंपेंसेट के लिए प्रयास करती है एंड एक्लिमेटाइज नहीं हो आप, उस समय फॉर एग्जांपल लंग्स, उसमें पानी भर जाता है धीरे धीरे. इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजिक्स उसमें काम आता है कि पानी फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो उसका पहला ट्रीटमेंट है कि उनको एल्टीट्यूड से डाउन करें. उनको उस एल्टीट्यूड से, सपोज हम 12,000 फुट में हैं, उनको 9,000 फीट से नीचे लाए. वो नेचुरली ठीक हो जाते हैं, बजाय इसके कि वहां पे 12,000 पे कुछ. हाँ, जब सांस फूलना शुरू होता है उसमें उनको दिक्कत होती है. हाँ, वहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो करना चाहिए उनको. हाई फ्लो ऑक्सीजन, प्रेशर, इसको कहते हैं कि कंप्रेस्ड ऑक्सीजन. ओके. जब वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होता है तो इवैक्यूएशंस बिकम्स ए प्रॉब्लम. हाँ, कैसे इवैक्यूएट करेंगे कैसे? हाँ, जैसे केदारनाथ, वेदर पैकअप, यू कैन नॉट ट्रैवल. The only emergency mode is by air. By road, it takes a lot of time. Yeah. It's raining, a lot of snow, landslides. Yeah. इस परिस्थिति में जो है आपको पेशेंट को डिटेन करना है, ट्रीट भी करना है. सो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन एंड चैम्बर्स के अलावा संभव नहीं है, मुश्किल है. सो ये चीज है जो कि एक प्लेन्स के डॉक्टर को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में. यही ट्रेनिंग है. ये सिम्टम्स भी पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा. मतलब ये है एल्टीट्यूड रिलेटेड सिम्टम्स है. तो जैसे सांस फूलना, गिडीनेस आना, चक्कर आना, या किसी को शुरुआत थोड़ा सा नॉर्मल सी इचिंग सी शुरू होती है हैंड्स में, फिंगर टिप्स में, पैरों में हेडेक होती है. तो इनिशियली समझ में नहीं आता कि क्या है ये. सो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है कि ये हाई एल्टीट्यूड सिम्टम्स है. Is high blood pressure like a really big problem? रियली बिग प्रॉब्लम. यस. वो हाई एल्टीट्यूड ही नहीं, नीचे ही, मतलब जहाँ रहे वहाँ भी प्रॉब्लम है. कई लोग लापरवाही करते हैं कि कई लोग आप सुनते होंगे, मैं कभी कभी दवाई ले लेता हूँ. तो बीपी वाली कभी कभी लेने वाली नहीं है. हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है, जब नेचुरली आपकी वहाँ सैचुरेशन कम है तो दिल की धड़कन बढ़ेगी. द हार्ट विल पंप मोर टू स्प्रेड more blood to carry more oxygen to the blood. So naturally your heart and blood tries to compensate the levels which are needed by the body. जब compensate कर रही तो उसको बीपी नेचुरली बढ़ता ही है, थोड़ा बहुत बढ़ता ही है. इसलिए जो पैदल यात्री जो है उनमें से उनको ये एक्लिमेटाइजेशन नेचुरली होती रहती है. धीरे धीरे चढ़ते हैं. But what have been your memories of some situations where you got scared? In 2018, there is a Times of India report opening of Char Dham. First fortnight, it has witnessed 158 pilgrims died in the first 15 days of Char Dham opening. This was the headline in Times of India.
Okay. So with that context, our well-wisher, mentor, philosopher who actually nurtured us to serve in this area, uh, he asked us, can we have a hospital there? I was also called, I was also trying to understand. Uh, so the total figure, the pilgrims this team, Badrinath Hospital, Vivekanand Mission rescued was 24,000 plus. Amongst them, we received 19 deaths in our hospital. Happened in the hospital. Out of 19, 17 were brought dead. There was one lady who had a local village lady. She had a fall from a roof. She had a brain injury, head injury, and eventually while treatment, we lost her. One incident which I'm trying to recollect has become, which was a nightmare for us. He had a heart issue. They decided to shift the patient to Rishikesh AIMS. Okay. It's a That travel. one patient. One patient. Travel time is 10 to 12 hours. So there is an area between Joshimath and Badrinath, Lambagad. Landslide happened. This area is prone for landslides. The entire reason is, yes, this is more prone for landslides. The ambulance got stuck. It was called back. Then we spoke to the authorities, the district magistrate. Already in my knowledge, our teams are on the way. They're doing something. So it obviously landslide, middle of the night. It's not easy task to clear the road. Next to impossible. In minutes, it's next to impossible when it happens in the larger scale. Yeah. So somehow it took few hours. Meanwhile, doctors have decided to bring the patient back. After a few hours, again sent them. This time, ambulance got repaired. It got stuck. So they called for backup. 108. They took the help of 108. Again it went. Again landslide happened. Oh gosh. So likewise, I think Lord Yamaraj was standing there. Ultimately, God has taken him to his folds. What eventualities can happen. Yeah. So this also give us insights ki how much we should be prepared for the worst situations to handle. Is the situation of the mountains where healthcare facilities has to be improved. AIMS Rishikesh is doing wonderful job. Okay. They have got a beautiful trauma center, trauma team. And since couple of years, they have got dedicated heli ambulance. Air ambulance. Air ambulance. Wow. They've got dedicated pilots. Because pilgrimage is one setup of emergencies. Locals are there. Locals are there living hundreds of 14,500 villages approximately. 14,500 villages. Approximately. क्या आप मानते हो कि विल पावर से जीवन बढ़ सकता है? बिल्कुल. विल पावर इज एवरीथिंग. और विल पावर बिल्ड कैसे कर सकते हैं? साधना से और कमिटमेंट से. फेथ से. प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस से छोटी छोटी प्रैक्टिस से विल पावर अपने आप को आत्मशक्ति बढ़ाने की हिम्मत देती है. फॉल्स गोल सेट ना करे. गोल सेट करे तो उसके ऊपर धीरे धीरे काम करे. हर बार उसके ऊपर काम करे, हिम्मत बढ़ाए और ट्राई करे, बार ट्राई करे, लाख बार ट्राई करे. गिव अप ना करे ना. लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग चार धाम जाते हैं या माउंटेन्स में कहीं पे भी जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, आपका उनको क्या एक चेकलिस्ट है, एक मैसेज है? प्लीज डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस. सबसे पहले तो जो है माउंटेन्स को बचाना चाहिए. yes. और अपना जो पैशन है तो
वहाँ प्रदूषित ना करने का भी जिम्मेदारी है, और पर्पसफुल ट्रैवल करें हम्म, और जिम्मेदारी से ट्रैवल करें और प्लान ट्रैवल करें, और वहाँ की कल्चर या स्पिरिचुअलिटी जो भी आप अपनी पर्पस है, हम्म, माउंटेन्स हैज़ गॉट सम लाइफ yeah, एंड विदाउट माउंटेन्स वी कैन नॉट लिव। yeah. लोकल लोगों को भी समझना चाहिए कि टूरिज्म और आय के चक्कर में अपने कल्चर को एक हद से ज्यादा ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज ये करें। अगर मान लो मैं कहीं होम स्टे में स्टे कर रहा हूँ, आजकल होम स्टेज बहुत है, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जो उगती है, जो सब्जियाँ या खाना, जो दालें, वहीं खाए, हाँ एग्जैक्टली, वो लोग भी वहीं खिलाए, हर जगह मटर पनीर मिलता है है ना? जो कि वहाँ का है ही नहीं, वहाँ का है ना नहीं। मटर है ना पनीर है। हाँ हाँ। Yeah. सो वहाँ तो बेचारे पूरा मैगी की Oh. पॉलीथीन से भर दिया पूरे Yeah. पहाड़। Yeah. और पर्पसफुल ट्रैवल करें। अपनी खोज है तो उस शांत मन से आपको रहने के लिए जाइए और उसे दर्शन करिए, ध्यान करिए, है ना? तो कुछ लेके वापस आइए। कुछ वापस लेके आइए। हाँ, लेकिन जो जगह आपको जैसी मिली थी वैसे छोड़ के भी आइए उसको, और हाँ। गंदा करके, खराब करके हाँ, ये तो नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। नहीं, क्योंकि नहीं तो वहाँ के पानी खत्म हो जाएगी, पहाड़ खत्म हो जाएगा, बारिशें नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब बहुत सारे चीज़ें होंगी। हमें भगीरथ को याद करना चाहिए। किस संदर्भ में? आज जो गंगा बह रही है तो उसको लाया कौन? आई कैसे गंगा जी यहाँ? शिव जी। अगर सोशल रिलेवेंस अगर आप देखें कि सिंधु नदी जो अपनी है, अपना सिविलाइजेशन को सिंधु नागरिकता ऐसे भी कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब एवोल्यूशन जो है, हाँ, जहाँ पानी सिंधु नहीं है, नदी के आसपास हुआ जहाँ है। पानी नहीं है वहाँ जीव नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पानी था वहीं शुरू हुई, वहीं जीवन शुरू हुआ। तो इस तरफ की जो भारत है जहाँ अभी गंगा जी बहती है, ये यहाँ एक बूंद पानी नहीं था। अगर सोशल रिलेवेंस आप देखें कि भगीरथ जी सूर्यवंश के राजा थे, उनकी 6 पीढ़ी से पहले इसके ऊपर बहुत काम किया। एक राजा का दायित्व जिम्मेदारी है कि उन प्रजा को सुख रहे, सुख रखे। तो पानी ही सब कुछ है, बेसिक है। पानी नहीं तो ना खेती है, ना पक्षियों के है, ना आदमी के लिए पीने, कोई जीवित ही नहीं रहेगा। सो 6 पीढ़ी अथक प्रयास किया जल को लाने के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में आप कल्पना कीजिए, 2,500-3 हजार किलोमीटर पानी लेके गया भगीरथ जी ने। लाखों करोड़ों ग्लेशियर्स को स्टडी किया, जहाँ से पानी स्रोत है, उसको इकट्ठा किया, उसको नीचे लाने का एक रास्ता बनाया। और इतनी पानी जब नीचे आएगी तो उसका फ्लो को मेंटेन करना है, उनका एक रास्ता बनाना है। और इतनी पानी जब नीचे आएगी तो उसको कहीं अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, कहीं पहुंचाना है। वो समुंदर जहाँ वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो कहाँ गौमुख और गंगोत्री से पानी आए नीचे, कहाँ बे ऑफ बंगाल, कहाँ देवप्रयाग में जो है उसके ऊपर अलकनंदा मंदाकिनी जो बद्रीनाथ केदारनाथ से आके देव अपना रुद्रप्रयाग में एक होती है, मिलती है। भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर आगे से गंगा कहा जाता है। तो इस पूरा दौर आगे आप अभी तो वर्तमान में उत्तराखंड, यूपी, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल जब जाती है, इतनी लंबी रास्ते, इतनी लंबी विजन को तय करके इस काम को अंजाम दिया भगीरथ जी ने। तो उस समय की परिस्थिति क्या होगी, कितना समय लगा होगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या दिमाग लगाया होगा, कितने लाखों लोगों को काम में लगाया होगा। तो इसके ऊपर अगर अध्ययन करें और इसकी इम्पोर्टेंस लोगों तक जाए, बच्चों को पढ़ाए और हम समझे सबसे पहले जब त्रेता युग में राम थे, उसके पूर्वज थे, तब से लेके अब तक तीसरा युग चल रहा है, अभी तक पानी का स्रोत हम पी रहे, उसका आनंद ले रहे हैं। अब तपस्या को, ऋषि को समझने का परिप्रेक्ष्य है। सो दोस वर सीड्स। ऋषि जो है कोई पेड़ के नीचे, पहाड़ों में
पढ़े हुआ ऐसा व्यक्ति नहीं है. दे वर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, हाईली साइंटिफिक रिसर्च करके एक एक चीज़ को हमें तक पहुंचाया. तो इसके ऊपर हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में समझ के मॉडर्न सॉल्यूशंस, जब एक व्यक्ति 3 युग तक पानी पहुंचाया, आप एक घर तक नल तक पानी नहीं पहुंचा रहे हो, वो भी सेफ ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर. नाउ वी हैव टू रीडिफाइन आवर गोल्स, लाइफ गोल्स. All our scientific knowledge, efforts should be aligned towards basic things. Yeah. How to And set. we all have to do it. Yes. जब मुझे डॉक्टर रेड्डी के काम के बारे में पता चला था, सो मुझे खुद ये बिलीव नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कुछ साल पहले तक, मतलब 10-12 साल पहले तक वहाँ पे इन 4 धाम के रूट्स पे हॉस्पिटल्स की और हेल्थ केयर की ये हालत है. करोड़ों आदमी, ओवर 1 करोड़ लोग जाते हैं हर साल 4 धाम की यात्रा पे. और ऑब्वियसली ये सारे लोग हमारी सोसाइटी के हर दबके के होते हैं. बहुत सारे लोग तो वैसे होते हैं जिनके पास राइट क्लोथिंग भी नहीं होती है, राइट शूज़ भी नहीं होता है, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है, और वो लोग जाते हैं. लेकिन बॉडी का तो कुछ भी नहीं कह सकते ना पहले से. तो हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया या कार्डियक अरेस्ट या कोई फ्रैक्चर हो जाना, हेड इंजरी हो जाना होता रहा है. आपने अभी सुना, डॉक्टर रेड्डी ने खुद बताया. और उस टाइम पे कितना कम सर्वाइवल टाइम होता है, बट फिर भी ऐसे ही चल रहा था. सो थैंक गॉड दैट दीज 4 डॉक्टर्स ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया. आज आई थिंक अगर मेरे पेरेंट्स जाएं, मेरे जानने में कोई भी सीनियर जाए, तो अब वो सुविधा है जो कि एक्चुअली मैंने अज्यूम करी थी कि हमेशा ही रही होगी, बट नहीं थी. वाओ. एंड वेरी नाइस कि इन्होंने ये ऐप भी बनाया है जो कि आपको एम्बुलेंस फटाफट बता देगी, आ जाएगी आपके पास, या आपको नियरेस्ट इनका हॉस्पिटल बता देगी. प्लस आई थिंक जो इनके ऐप के प्लान्स हैं बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है. और आई थिंक जो बात ध्यान देने वाली है कि आप इस ऐप को अपनी यात्रा पे निकलने से पहले यूज़ कर सकते हो. सो टू प्लान द रूट, टू प्लान कि कौन सी चीज़ किसके पास में है, सो दैट इट एक मेंटल नोट होता है, बिकॉज बॉडी में कभी भी कुछ भी हो ही सकता है. सो आई होप दिस इज़ यूजफुल. और जब हम इस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं तो हमें हिमालयाज़ में थोड़ा और जाना चाहिए. Obviously for the adventure of Himalayas, for the love of the mountains for sure, but also for the mind. What does it take? What sort of a mind does it take to survive in those extreme challenges? So you must listen to the podcast with Rommel Berthwal, who runs a company called Boots and Crampons. और वो आपके मेरे जैसे लोगों को हर साल बहुत सारे ऑर्गेनाइज ट्रैक्स पे लेके जाते हैं. और वो इसलिए ले जा पाते हैं क्योंकि वो खुद बहुत ट्रेंड है, उनकी पूरी टीम बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत प्यार से लोगों को बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं कि हिमालयाज़ के अलग अलग ट्रैक्स करवा पाएँ. लेकिन ख़ास बात ये है कि रोमल ने भी बोला था कि what happens in high altitude you can never gauge by on ground. No doctor can predict कि किसका body work करेगा in those kind of heights or not. So it is important to know कि हम ऐसे ही उठ के कभी भी high altitudes पे नहीं जाएं. Give proper time for acclimatization. Carry the important medicines. Do consult a doctor before going. So at least be prepared. So I hope you listen to both of these and understand कि 4 धाम की यात्रा is not just about faith, but it's also about understanding the body and also understanding कि जब अगर body में कुछ problem हो जाए तो क्या करें. I hope you're enjoying our channel. Keep flirting with the fish.